क्या आप अपने करियर से खुश हैं? Are you really doing what you truly love and enjoy? If the answer to that question is no, then ये वीडियो आपके लिए ही है। पर अगर उस क्वेश्चन का आंसर हाँ है कि आप जो कर रहे हैं उससे आप प्यार करते हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा 4 टिप्स एंड ट्रिक्स, टेक्निक्स that will allow you to transform your career at any stage. Why am I the right person to speak about that? पिछले 16 साल में मैंने 4 करियर शिफ्ट्स किए हैं एंड थैंक गॉड सक्सेसफुली किए हैं, जो आज भी मैं आपके सामने बैठकर यहाँ पर ये बात कर पा रहा हूं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप करियर शिफ्ट कैसे कर सकते हैं। But as always, before we begin, you are at IgnitedNeurons. Our mission is to touch a billion lives positively. And आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक शेयर इस मिशन पे हमारी हेल्प करता है। अब आज की वीडियो में क्या बात करेंगे? पहले मैं आपको सुनाऊंगा कहानी। उस कहानी में मैं सुनाऊंगा कि कैसे मैंने अपनी लाइफ में एक करियर चेंजेस किए, एंड उस कहानी के थ्रू आई विल गिव यू 4 स्टेप्स। इन 4 स्टेप्स में जो 4th स्टेप है, टू मी दैट्स अ वेरी क्रिटिकल स्टेप, सो मे बी मैं उसको पहले दे दूंगा, बट पहले शुरू करते हैं उस कहानी से। आज से कुछ 18 साल पहले, 19 साल पहले, 2003 की बात है, आई गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड इनटू अ प्रोग्राम, बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी। उस टाइम डॉक्टर बनने का शौक था कि सर्जन बनेंगे, बट सर्जरी में तो कहीं हुआ नहीं। डेंटल में हुआ था, बट डेंटिस्ट बनने का ख्वाब नहीं था, क्योंकि मैं लोगों के मुंह के अंदर झांक नहीं सकता था। एंड ऑल रिस्पेक्ट टू ऑल डेंटिस्ट, बिकॉज यू गाइस डू अ ट्रिमेंडस एंड अ ब्यूटीफुल जॉब, बट मेरे लिए वो कॉलिंग नहीं था। जब फिजियोथेरेपी का पता चला तो कॉलेज पहुंच गए और सोचा कि ये तो राइट पाथ है। यू गेट टू हील पेशेंट्स, यू गेट टू नॉट डू एनी सर्जरी, नॉट सी एनी ब्लड, एंड बट स्टिल हेल्प देयर लाइव्स। एंड एज दे यूज्ड टू से, बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट यू ऐड क्वालिटी टू द इयर्स एंड नॉट जस्ट इयर्स टू द लाइफ। एंड सो बहुत ही पर्पसफुल जॉब लग रहा था, टास्क लग रहा था कि ये तो अच्छी पढ़ाई है, विल गो थ्रू ऑन दिस पाथ एंड डू रियली वेल। तब सपना था कि इंडिया का बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट बन के दिखाऊंगा। शुरू किया, बैचलर्स करी, फिर मास्टर्स करी ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी में, एंड देन आई स्टार्टेड माय ओन क्लिनिक। 6-7 years of expanding my clinic from east of Delhi, opening a fitness center, to going to north of Delhi, and then finally I was looking at opening a new clinic in southern part of Delhi. Now 3 clinics संभालना was a Herculean task, and I was feeling very purposeful at that time. But कुछ 7-8 साल होने के बाद 2013 में I started to feel that क्या मेरी लाइफ का यही मिशन है कि मैं 100, 200, 1000, 10,000 पेशेंट्स को देखूंगा, उनकी लाइफ को हील करूंगा, आई विल अर्न वेल, एंड दैट्स अबाउट इट। एंड आई वाज नॉट रेडी टू टेक दैट, एंड टू मी आई वांटेड समथिंग लार्जर इन माय लाइफ। I started networking with people, and through my network I found this job that there was this institute run by a professor at Columbia Business School, and वो लोग अपना गुड़गांव में उन्होंने ऑफिस शुरू किया था, and they were looking for some people, and I reached out saying, guys, hire me. And they said, Utkarsh, what would you do? Like, start to write prescriptions for backache at the office? And उनका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही था। बट यहाँ पर मैं पहले पॉज करूंगा और आपसे शेयर करूंगा पहला लेसन। अगर आप कोई भी करियर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पहला लेसन आपको करना है वो है थरो नेटवर्किंग। अगर आप बार बार लोगों से मिलेंगे नहीं, लोगों से बातचीत नहीं करेंगे, तो you're not going to gain anything out of your attempts to career shift. अल्टीमेटली करियर शिफ्ट तब होगा जब आप अपनी आइडेंटिटी को फ्लेक्सिबल बनाकर आगे बढ़ेंगे, उन लोगों से बात करेंगे जो कुछ और कर रहे हैं लाइफ में, जो कुछ डिफरेंट कर रहे हैं लाइफ में, एंड हाउ डू यू देन अंडरस्टैंड कि वो जो लोग कर रहे हैं वो आप कैसे कर सकते हैं। सो दैट नेटवर्किंग इज वेरी वेरी क्रिटिकल इन योर परसूट ऑफ शिफ्टिंग योर करियर्स। अब जब मैं वहां पहुंच गया तो उन्होंने मेरे को हायर कर लिया, 3 महीने का टाइम दिया टू फिगर आउट, उत्कर्ष, व्हाट डू यू वांट टू डू। इनिशियली मार्केटिंग से शुरू किया था मैंने, एंड आई रिमेंबर दोज लेट नाइट कॉल्स बिकॉज द कंपनी वाज इन द यूएस, एंड मेरे को तो 10 बजे नींद आ जाती थी, सो 10:30, 11 बजे आई वुड मिस कॉल्स, एंड इट वाज अ ड्रेडफुल टाइम, एंड आई वाज लाइक, उत्कर्ष, यू स्क्रूड अप, वेयर हैव यू पुट योरसेल्फ इनटू, एंड तुझसे नहीं होने वाला है, तुमसे ना हो पाएगा, घर जाओ प्लीज। पर डटना तो था ही। आई मीन देयर वाज नो ऑप्शन ऑफ गोइंग बैक। आई वाज स्टिल डूइंग माय क्लिनिक। I used to start with my clinic. I used to get to the office in Gurgaon, spend 7-8 hours at the office, come back to my North Delhi clinic, then come back to my East Delhi clinic, and that was my home. So ये pursuit चल रही थी, पर 2-3 महीने के अंदर ऐसा फील हुआ कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। That institute was trying to produce a lot of digital content, and they were paying very highly to producers in at BBC and in the US. And I thought, I will learn this task. वीडियो को फिल्म करना, वीडियो को एडिट करना और प्रोडक्शन, मैं ये काम सीख के रहूंगा। एंड तब 2-3 महीने में परसूट स्टार्ट हुआ ये नया स्किल सीखने का। यहां पे आता है दूसरा लेसन।
कि जब भी आप अपनी एक आइडेंटिटी से दूसरी में शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको उन दोनों आइडेंटिटीज को इकट्ठे निभाना भी सीखना होगा। कि मैं फिजियोथेरेपिस्ट भी था और मैं जाके पेशेंट भी देखता था, लेकिन मैं दिन के समय में यह भी कोशिश करता कि मैं कैसे फिल्मिंग सीखूं, कैसे मैं कैमरास को पकड़ना सीखूं, कैसे मैं वीडियो को एडिटिंग करूं। Ultimately, through a lot of failure, through a lot of feedback, through a lot of criticism, through a lot of learning, I was able to learn how to film, how to edit. And वहां से शुरुआत हुई मेरे अगले करियर की। सो ये वो पॉइंट था जहां पे मेरे को डिसाइड करना था कि अब मैं सस्टेनेबल लाइफ बना सकूंगा इस नए करियर के साथ या नहीं। एंड दैट्स व्हेन आई लेट गो ऑफ माय फिजियोथेरेपी पास एंड आई मूव्ड ऑन टू दिस न्यू वर्ल्ड, अ डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी फॉर अ लीडरशिप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इट वाज अ कंप्लीटली न्यू आइडेंटिटी, बट आई वाज एट इट। मैं कई बार हांगकांग गया, न्यूयॉर्क गया, एलए गया, लॉस एंजलिस टू फिल्म विद प्रोफेसर्स। एंड वो बहुत ही एक यूनिक टाइम था मेरे लिए, क्योंकि here I was, part of me was still a physiotherapist, but part of me was still wanting to be this head of videography and production. And उन दोनों के बीच में I would on some days doubt myself, but I did not give up. I kept working hard, working hard, working hard. Like मेरे को याद है जब भी मैं यूएस में हुआ करता था, I used to film for like 8 to 10 hours. I used to then get back to my hotel room and start to edit that content. And before the next day, when we would meet the professors to film the next content, my edits were ready. Everyone was just impressed, like, how is Utkarsh putting in so much? But that is it. I was ready to learn. I was ready to get feedback. I was ready to get criticized, because वो criticism मेरे लिए नहीं था, मेरी एक नई identity के लिए था. So that's your second lesson. वहां से कहानी आगे बढ़ती है। 4 साल ऑफ फिल्मिंग एंड वीडियोग्राफी करने के बाद, when I produced 300-400 hours of content, then I decided कि अब मेरे को ये प्रोडक्ट अच्छे से समझ आता है. I understand this market really well. Now I need to move to the new identity. The opportunity is to do client development, sales करने के लिए एक opportunity थी. एंड उस अपॉर्चुनिटी पे जंप करने के लिए आई स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स इट। मैंने छोटे छोटे स्टेप्स लिए। मैंने एक क्लाइंट से बात करी, दूसरे से बात करी, while I was doing the filming. And then there was this breakthrough when a senior person at the office had left, and मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली एक क्लाइंट से, बहुत ही यूरोप के सीनियर क्लाइंट थे, उनसे बात करने की। एंड आई सोल्ड देम अ प्रोग्राम। आई मेड द कंपनी अ व्होपिंग $120,000। एंड वो सेल करने के बाद मुझे मिला कॉन्फिडेंस that वो जो छोटे छोटे steps मैं ले रहा था towards this new identity of being a salesperson for that leadership training institute, being a head of operations for that institute, that was my new identity. After that big one success that happened, it could have happened just because of luck, but after that big success, that's when I started moving to this new identity where I would want to do sales for the organization. So that's the third lesson, कि छोटे छोटे steps लेने हैं आपको towards your larger goal. क्या आप वो छोटे स्टेप्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या आप उनको एक्शनाइज कर सकते हैं? दैट्स व्हाट यू नीड टू लर्न। नाउ पुट इन द कमेंट सेक्शन कि इस वीडियो में अभी तक ये जो 3 लेसन्स आपने सीखे हैं, इससे आपको क्या समझ आया, इनमें से कौन सा आपको मुश्किल लग रहा है, किस पे मेरे को एक डीप डाइव वीडियो बनानी चाहिए, एंड आई लव टू गो थ्रू दैट। फाइनली आता है मेरा आखिरी अभी तक का लास्ट चौथा ट्रांजिशन। कुछ साल सेल्स करने के बाद, ऑपरेशंस हेड करने के बाद, मिडल ऑफ द पैंडेमिक, कोविड के समय में जब वर्क फ्रॉम होम हो रहा था, I started to feel that sense of the time कम है लाइफ में, and I know I love my job. It's very purposeful. The team is great. The manager that I had, the founder, everything was perfect. But I wanted to do something more, and that's when I decided that maybe it is time for me to jump and build my own organization. And वहाँ पर शुरुआत हुई IgnitedNeurons की। पर उस आइडेंटिटी के लिए भी मैंने सीधा एक फाउंडर की आइडेंटिटी नहीं ली। मैंने पहले ये समझा कि मैं एक कोच बनना चाहता हूं, जिससे मैं और लोगों की हेल्प कर सकूं, उनका हाईएस्ट पोटेंशियल पहुंचाने के लिए, उनको इस जर्नी पे लाने के लिए कि वो अपना बेस्ट वर्जन कैसे ढूंढ सकते हैं। तो मैंने धीरे धीरे कोचिंग स्टार्ट करी। पहले मैं इंटरनली अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोगों को कोच करने लगा, फिर मैं अपने कुछ फ्रेंड्स को बोलने लगा कि तुम मुझसे कोचिंग करवाओगे, एंड इफ दे वर गिविंग पॉजिटिव रिव्यूज, देन आई वाज थिंकिंग लाइक वाओ, दिस मेक्स सेंस, मे बी मैं कोच बन सकता हूं। मैंने एक प्रोग्राम किया कोचिंग में, व्हिच वाज वेरी स्मॉल इनएक्सपेंसिव काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, 25-30 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट था। जब 6 महीने वो करने के बाद मेरे को कुछ कॉन्फिडेंस मिला, देन आई इन्वेस्टेड इनटू अ लार्जर प्रोग्राम व्हिच वाज अ मोर एक्सपेंसिव प्रोग्राम। But then when that also happened, and then one of my founder friends gave me a small contract of coaching there 5-6 people, that's when I decided that now it's time, now I'm ready to be a coach. And that's my fourth identity, and that's the lesson that I want to give, कि जो आपकी लाइफ की जर्नी है, that can take new and beautiful forms. So for you to move from one identity to the other, you have to do these things very, very thoughtfully. The first is take small steps. You have to not take a big leap, but take very small logical steps. The second is identify your opportunities, कि आप करना क्या चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो, कहाँ पर opportunity ज्यादा है.
Third, be open to criticism, be open to learning, be open to failure, be open to a lot of hard work. जो साइड गिग्स होते हैं वो कब प्रोफेशन बन जाते हैं पता भी नहीं चलता, लेकिन उन साइड गिग्स को करने के लिए जो एफर्ट चाहिए वो आपको हर रोज पता चलेगा. एंड फाइनली, आई नो इट्स अ क्लीशे, बट यू हैव टू लव व्हाट यू डू. आवर टाइम ऑन दिस प्लैनेट इज लिमिटेड, एंड अगर हम वो काम नहीं कर रहे हैं जिससे हमें जॉय मिलता है तो फिर हम कुछ सही नहीं कर रहे हैं. एंड आई नो ये सबके लिए आसान नहीं होता, आई नो ये हर कंडीशन में इजी नहीं होता. आई वाज मे बी लकी, लॉजिकल, व्हाटएवर यू माइट कॉल इट, एंड मे बी आपके लिए डिफरेंट लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगी. But if you're on this path, if you're thinking with a clear head, if you're non-emotional about it, logical about it, I'm sure you will also get there. I hope this video was of value to you, and I hope इससे आपको inspiration मिलेगी अपनी लाइफ में करियर शिफ्ट करने की, अपनी लाइफ में वो ढूंढने की जो आप करना चाहते हैं. Please make sure कि you don't risk your life, your family, or your investment or your savings when you do these leaps. It's not always passion. Passion has to pay for it to make sense. If this video was value, like it, share it with others, and do definitely subscribe to the channel, because you and we are on a mission to touch a billion lives positively.